that happening anywhere, but I think this is a good uh, platform to get these kinds of things going. Can I speak? Hi, this is Sangeet Verma. I'm from Bhopal. When we essentially talk about smart cities, these cities are meant for smart citizens. And the citizens include citizens of cities as well as citizens of rural and traditional India. My point is that essentially the cities have dwelled on the resources of rural India, which are mandatory. So, suggestion A is, can we have a system of developing a good rural backdrop in and around the smart cities, whereby essential commodities like milk, like fresh vegetables, and other rural products which are also important for the smooth running of smart cities can be made easily available. So suggestion is that along with this planning of smart cities, can we have some very good planning of well-planned villages which can act as good resource providers for these cities, A. B is that these cities in various terms are going to address the employment necessities of a huge urban crowd and are going to return prosperity in return to the urban crowds. Now, there is a huge part of India which lives on traditional values, which lives on traditional skills, essentially. And this, this traditional part of India should essentially also be a stakeholder in these smart cities. So, can we think about a 1,500 acre forest land, because environment being the topic of the day? Can we have a patch of a forest developed, well developed forest within the smart city, whereby the traditional Indian handicrafts can be put on display? In other terms, can we have a geocultural habitat for traditional India to come and sell their skills and product in the smart cities, so that vice versa, nobody is left out in this growth towards development and prosperity? Thank you. I'd like to share some points. I'm from here. Uh, I'm Dr. Ragini. I'm a clinician and a faculty at V School. Today, everyone knows that India is the world capital of health issues, obesity, and diabetes. And the simplest solution to all this is to burn your calories. But unfortunately, we don't have such an environment that is facilitating all this. So I was just wondering if the urban design includes opportunities for incentivizing youth to burn their calories, which will be serving as an energy for you somewhere. Yeah, I'm Sumitra Kadam, and I just have a thought that instead of first making cities smart, if we make villages smart, that is smart villages, then we, to some extent, we can control urbanization, and then it will be much easier to make cities smart if we approach the other way, that is from smart villages to smart cities rather than from smart cities to smart villages. yeah, Could, yeah. could I say something? Yeah, I would like to say something. Yeah, hello. Just one quick response to what she said. Just the idea we should not only stop at cities, we should also have smart villages. One of our group organizations has done some good thinking. Yeah, okay, okay. Has done some good thinking, and I'm going to share those thoughts with the organizers here, so that the next conference could be on smart cities, smart villages. Yeah. Yes, I would like to say something. This is basically when we are talking about the smart city projects. I would like to share my experience. I am Mr. Mendonca from Project Consultants from Navi Mumbai. We are a project consultancy firm for the past 27, 28 years practicing in the state of Maharashtra. I would like to just share my experience very particularly uh, in general in all India and particularly to the state of Maharashtra. Now this so-called special, the smart cities. I have a small statistic with me here. The government of Maharashtra in 2006 came out with a special township project called as STP, for which you should have 40 hectares plus land
So you get a location clearance from the government of Maharashtra, and you as a private developer can develop a city. Now, this point is basically related to the regulatory system by which you get all the approval. There are around 92 approvals you need to get a special township project being approved by the government of Maharashtra. Only to get a location clearance, that is the prima facie approval of the government, which took 3.5 years to get the basic location clearance for us. To reduce the regulatory timing, because when we say smart city, then if you permit me, I have made some system called as smart planning, smart regulatory system, smart compliances, smart approvals, smart project implementation, smart people to occupy the project, smart revenue payments, smart services, smart maintenance and operation, and the end, smart and happy living. So my suggestion here is, as the special township took 3.5 years just to get the location clearance, thereafter we have to go to the assistant director town planning at Alibag because the project was in Raigad district. So that has taken another 1.5 years. By the time we start implementing the project, we have already lost 5 precious years of time, and the client has put in 60 crores of rupees investment in the project. This is a practical example available with us. I would like to give one more example of the MMRDA, which has come out with the rental housing scheme, whereby they give you 4 FSI, out of which 1 FSI you have to build and surrender to the government, and the 3 FSI the developer could sell it in the open market and recover his cost. Now this also has taken almost 1.5 years to get the location clearance. And by great difficulty, after getting the location clearance from the MMRDA, it has taken 2 years to get the approval from the assistant director town planning, that too not to the satisfactory of the actual requirement. Okay. Yeah. So what would be the, because I can't see any government officials in this forum, I'm sorry to say, but how are we going to plan the regulatory aspect? That's my question. Yeah. Yeah, but this forum also has to think on those lines, no? Otherwise, we talk and we forget and we go back. Yeah. See, we cannot have fast forward situation anytime. So we need to go slow, and that's what exactly we plan. So I think, as I said, we could have taken only a couple of such questions. So those have been taken. But of course, we don't stop here. What we are going to welcome is that if any suggestions are there, still a concrete one, as I repeat again, suggestions alone, they should be mailed to contact@smartcitybharat.org. I think the website is now familiar to all of you, those who have been interacting with us by medium of internet. I repeat, contact@smartcitybharat.org. That should be done. And also another request is that anybody of you who wants to pursue this with us, to come with us and take this forward, is requested to register with that particular intention. Means suggestions are welcome, of course, but somebody who can come with us and take this forward, that is being requested. Now the next session is going to be a panel discussion. Same panel remains here. Only one thing is that one of the anchor from CNBC Awaz will be joining you all here on the dais. And as you must have seen that this particular channel has been recording all the proceedings of two-day conference. What is going to happen further is that on this channel, there is going to be a half-an-hour capsule on our conference, which has happened, deliberated on 6th and 7th of June, 2015. It will cover the two-day proceedings and also
the opinions of all experts, which has been documented through their interviews. So now let us wait for this particular panel discussion to begin. I'll request the anchor to be on stage, please. नमस्कार। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 स्मार्ट सिटीज बनाने का ऐलान किया है, तब से हर कोई चाहता है कि उनका शहर जो है स्मार्ट बने, स्मार्ट सिटी बने। साथ ही इस मुद्दे पर कई सारे कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, लेकिन आज जो कॉन्फ्रेंस यहाँ वेलिंगकर कॉलेज में हो रहा है, जो कॉन्फ्रेंस विज्ञान भारती कर रहा है, वो अपने आप में काफी अलग है, क्योंकि इनका अप्रोच भी बहुत अलग है। ये नहीं चाहते हैं कि बनारस में बार्सिलोना बने, बल्कि ये चाहते हैं कि बार्सिलोना, सिंगापुर जैसे जो ग्लोबल सिटीज है, वहां से हम सीखें और फिर बनारस में बनारसी मॉडल बनाए और बनारस को स्मार्ट सिटी बनाए। तो बेसिकली जो है मेड इन इंडिया स्मार्ट सिटीज बनाने की बात हो रही है यहाँ पर, ये कहना ठीक होगा। तो हमारे साथ है एक बहुत ही खास पैनल। चलिए सीधे सीधे उनसे पहले मिल लेते हैं। हमारे अगर आप देखें तो मेरे बाएं तरफ है डॉक्टर माधव चितले। ये काफी जाने माने जो है एनवायरमेंटलिस्ट है। वाटर पर इन्होंने बहुत काम किया है, हैबिटेट्स पर इन्होंने बहुत काम किया है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज लॉरेट है ये। इनके बगल में है श्री अरुण नंदा जी, जो कि महिंद्रा लाइफ स्पेसेस के चेयरमैन है और कई सारे इंडस्ट्री बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव है। और इनके पास बैठे हुए डॉक्टर सतीश वटे, जो कि नीरी एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है। और मेरे दाईं ओर अगर आप देखें तो डॉक्टर वी.के. सरस्वत है। ये नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर है और आपने पृथ्वी मिसाइल जो है उसके लिए एक तरह से लीड, ये इन्होंने लीड किया था पृथ्वी मिसाइल का रिसर्च और डेवलपमेंट। इनके बगल में है इनके बगल में श्री अश्विन भाई श्रॉफ, जो कि एक्सेल इंडस्ट्रीज के सीएमडी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में इन्होंने काफी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी बनाया है। और इनके बगल में बैठे हुए आर्किटेक्ट विवेक पाई, जो कि विज्ञान भारती के नेशनल सेक्रेटरी है। तो काफी जैसे मैंने कहा स्पेशल पैनल है। सीधे मुद्दे पर आते हैं, शुरू करेंगे। सर आपसे शुरू करते हैं। डॉक्टर चितले, आपने जब आप बात कर रहे थे, आपने एक बॉटम अप मॉडल के बारे में बात किया था। आपका कहना था कि एक तरीके से आपने कहा नागरी मंच बनाए और लोगों का जो है एकदम पार्टिसिपेशन बढ़ाए स्मार्ट सिटीज बनाने में। ये बताइए, जनरली देखा जाता है सोशल कंसेंसस जब हम लोग लेकर आते हैं कहीं पर, तो वक्त बहुत ज्यादा लगता है। तो सोशल कंसेंसस, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, इन दोनों को किस तरह बैलेंस करें? हमारी जो कार्य प्रणाली है उसमें चाहे कोई भी प्रकल्प हो, जैसे बांध बनाना हो या कहीं भी रेलवे का विस्तार करना हो, तो आज के जो हमारे नियम बने हुए उसमें जिन लोगों को उससे बाधा पहुंचती है उन लोगों से प्राथमिक चर्चा होना आवश्यक है। तो इसका दूसरा अर्थ ये भी होता है कि जिन लोगों के लिए ये बनाना है, जैसे आज हम शहरों के विस्तारों की बात कर रहे हैं, नागरीकरण की बात कर रहे हैं, तो वो नागरिक क्या चाहते हैं असल में? क्या उनके ऊपर हम कोई अपनी इच्छा थोप रहे हैं? ऐसी तो गलती नहीं हो रही। इसीलिए उन नागरिकों से अगर बात करनी है तो वो दो धाराओं से हो सकती है। जो एक हमारी नागरिक व्यवस्था राजकीय दृष्टि से बनी हुई है, नगर सेवक है, महापौर है, उनके माध्यम से हो सकती है, लेकिन उनका उनके पदों पर का अस्तित्व ये सीमित काल के लिए होता है, 3 बरस, 5 बरस, ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्षों के लिए। लेकिन वहाँ रहने वाला जो स्थायी समाज है, उनका भविष्य की ओर देखने का तरीका अलग होता है। उनको वहाँ 15 बरस, 20 बरस, 25 वर्षों के लिए रहना है। तो वो किस प्रकार की यातायात की व्यवस्था चाहते हैं, आरोग्य की व्यवस्था चाहते हैं, शिक्षा की व्यवस्था चाहते हैं, रोजगार की व्यवस्था चाहते हैं, उनसे पहले जान लेना, समझ लेना ये आवश्यक है। आज के हमारे जिस प्रकार की नियोजन व्यवस्था हम चला रहे हैं उसमें उनका आवाज नहीं आ रहा है। अगर हम इस दृष्टि से पूरे विश्व के अनुभव की ओर देखें तो पिछले साल जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस प्रकार के नागरीकरण के ऊपर बहस छेड़ी थी, तो उन्होंने शीर्षक ही ये दिया था
वॉइसेस फ्रॉम द स्लम्स, उनका कहना ये था कि भाई उनकी बात पहले सुनो कि आप क्या चाहते हैं और किस कारण से ये गलती होकर कुछ खामियां रहकर उनको स्लम्स में रहना पड़ता है, उनकी पहली बात सुनो। माधव जी, जो आप कह रहे हैं वो उसका इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत है, लेकिन ये बताइए कि जैसे यहाँ पर जैसे अरुण नंदा जी से पूछे आप, तो कई सारे प्रोजेक्ट इसी मुद्दे पर आकर अटक जाते हैं। तो एक तरह सोशल कंसेंसस, दूसरी तरफ आपका एग्जीक्यूशन कितना जल्दी हो सकता है, इन दोनों को कैसे बैलेंस किया जाए? नागरिकरण के संदर्भ में कोई ज्यादा जल्दबाजी नहीं चलेगी। अगर जिन शहरों का अच्छे ढंग से विकास हुआ है उन सब का अगर हम इतिहास देखें तो कम से कम 15 बरस तो लगते ही है। तो 15 बरस में कुछ 1-2 साल उसके नियोजन के लिए देना, जिससे बुनियादी ढांचा अच्छे ढंग से बने और बाद में कुछ कठिनाई न आए, ये आवश्यक है। ये सावधानी की दृष्टि से आवश्यक है, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो स्थायी विकास की बात कर रहे हैं, कुछ तात्कालिक उपायों की नहीं बात कर रहे हैं। इस हमारा जो परिसंवाद चल रहा है उसमें तात्कालिक उपाय की बात कुछ न कुछ हो सकती है, लेकिन वो अलग है, वो अस्थाई है। और अगर हम भविष्य की ओर देखकर 15-20 वर्षों के बाद हमारा चित्र क्या होना चाहिए ये चाहते हैं, तो हमें 1-2 बरस इस प्रकार की बहस यानी चलाने लॉन्ग में टर्म डेवलपमेंट है तो बहस के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। आवश्यक। तो अरुण नंदा जी, यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछेंगे। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की कल बात हुई, बताया जा रहा था कि एक स्पीकर ने बताया कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क आपका तैयार नहीं है। कई